Hello everyone. So today we are starting with vector algebra, and we will learn all the concepts, and I will add some questions in the later with the examples with solution, and you need to solve them. And if you had any doubt, you can ask me later. Okay. So let's start. So what scalar and vector quantities? First, we need to learn what are these quantities. Okay. So let me tell you those quantities which have only magnitude, or uh, with the term magnitude, I means that they does not depend on any specifically directions, then they are scalars. Okay, and if they are depending on the scalars along with the magnitude, then these quantities are called vector quantities. That's the simple definition. What I mean by this, सपोज करो एक अ, आप एक बाइक राइड कर रहे हो, और बाइक राइड कर रहे हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होगे, आइदर इट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, और वेस्ट, और एनी ऑफ दीज फॉलोइंग डायरेक्शंस। तो अगर आप रोड पे बाइक राइड कर रहे हो तो इनमें से किसी एक डायरेक्शन में होगे। जरूरी नहीं है इनमें से किसी एक डायरेक्शन में हो, आप इधर भी किसी किसी एक पर्टिकुलर डिग्रीज में इसको ले सकते हो, या लेफ्ट या राइट कुछ भी ले सकते हो, एज एज पर योर कंडीशन। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, इसका मतलब ये। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका मतलब आप इस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब योर राइडिंग अ बाइक इज डिपेंडिंग, कैन बी डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली सपोज आपका वेट जो है वो, सपोज आप जो मिल्क लेके आते हो, 1 लीटर मिल्क आप मार्केट से बाई करके लेके आए, तो 1 लीटर इज जस्ट अ क्वांटिटी, इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन। 1 लीटर कैसे भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज एन स्केल। दोज क्वांटिटीज विच हैव नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन आर स्केलर्स, and if they are depending on the directions, then they are vectors. So this was the definition. अच्छा, सो बेसिकली वेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट कैसे होते हैं ये आप देख लेते हो। सपोज करो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, and this is some point A over here. Then OA means something starting from O and ending at at A. It means we are representing the vector OA by OA and arrow overhead the line OA. Okay, so simply OA is just a line, but when we add a arrow above it, then it represents a vector. All right. Next. So starting point is O, end point is A. All right. So every vector that is starting from the origin and ending at a certain point is known as the position vector. Okay. Okay. So if we want to find the, okay, next, let me tell you later. Okay. So there are some types of vector: free vectors, localized vector, and like vector. Free vectors are the vector which are not related to specific point are called free vectors. मतलब ऐसे वेक्टर जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे रिलेट नहीं करते हैं उनको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं, जो कि हो सकता है ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज की वजह से हो। हाँ, सॉरी, ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज की वजह से करना, वी डू नॉट अल्टर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज ऑफ फ्री वेक्टर, डिपेंड्स only upon its direction and magnitude. It does not depend upon its position in space. All right. So localized vector is a vector which can be shifted only along its line of axis, and like vectors are the vectors that propagates in the same direction. All right. Next is unlike vector. If the vector are not propagating in the same direction, then it is an unlike vector. That's simple definition. Unit vector. If a vector is divided by its modulus, modulus means suppose OP is your vector, then OP vector is the modulus of vector. So if we divide the vector by its modulus, then it is nothing but unit vector. I will tell you how to find the modulus of the vector. Okay. Suppose since vector is in 2D x comma y, then its modulus will be given by root x square plus y square. Simple. Suppose this is O, this is P, then modulus of OP is this.
Okay. Next, equal vector, if magnitude and direction of two vectors are same, then they are equal. Okay. Equality of two vectors are equal if their modulus is equal and they have the same parallel support and same size. Okay. नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस जीरो आ जाता है तो वो जीरो वेक्टर होता है, सिंपल. नेगेटिव वेक्टर, अगर किसी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो वो नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है. सपोज एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा था. कहाँ गया? ओके. सपोज दिस वाज द ए वेक्टर, इट वाज गोइंग लाइक दिस, and there is another vector v vector, it was coming like this in the opposite with the same magnitude, say m, its magnitude is also m, but the direction is opposite. Then this A is called negative of B and B is called negative of A. Next is collinear parallel vector. Vectors will be collinear if they are parallel to a given straight line. Suppose this is a vector, this is a vector, and this is the straight line. So all those vectors that are parallel to this particular straight line, they all are said to be collinear vector. And mention that the magnitude of collinear vector can be different. Next is coplanar vector. Okay, so coplanar vectors are those vectors which are parallel to same plane are called coplanar vectors. Since suppose this is the plane, okay, and two vectors are lying on this, then these are coplanar vector. If suppose this vector is like this, and this vector is like this, and this vector is like this. So these vectors are belongs to these planes. Say these planes. So this vector and this vector is not coplanar. This and this is not coplanar. This and this is not coplanar. Like this, okay. पोजीशन वेक्टर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर. अगर कोई वेक्टर किसी फिक्स्ड पॉइंट से ओरिजिन, हम ओरिजिन मान लेते हैं, से ओरिजिनेट हो रहा है और पी उसकी फाइनल पोजीशन है, देन बी से ओपी इज द पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर ओ ए एंड ओ बी. then position vector, then the displacement vector will be, suppose this is O, this is A, and this is B, then AB will be calculated by OB minus OA. Simple. Okay. Next, addition of vector, triangle law. Suppose this is your one vector A vector, this is your B vector, then total displacement will be given by A vector plus B vector. Okay, so this is the triangle law of addition. What I'm saying is, suppose this is your one vector, this is your another vector, then this vector A plus B is the triangle law of vector addition. Next is parallelogram of vector, parallelogram law of vector addition. Suppose what was happening in triangle law, उसमें यह था कि आप जो वेक्टर पहले यहाँ खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो हम ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं. बट सपोज करो एक वेक्टर हमारा इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर हमारा इधर जा रहा है, तो अब हम दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसके पैरेलल हमको एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लेना है. अब आप देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर इसके फाइनल पॉइंट से इसका इनिशियल पॉइंट है, तो अब हम यहाँ ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं. सो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ इज आल्सो अ ट्रायंगल्स लॉ बट इन अ डिफरेंट सेंस. वी टेक दिस एज दिस and we add them. Okay, so this vector will be a vector plus b vector when this is a and this is b. Okay. सिमिलरली इसी तरीके से आप पॉलीगन लॉ लगा सकते हो. ये वेक्टर है, व्हाट है, suppose this is vector, this is vector, and this is vector, this is vector. So parallelogram is simply from here to here. Okay, this is a b c and d, then this is a plus b plus c plus d. This is simple parallel polygon. Next is properties of addition of vectors. एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव. अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, चाहे ए प्लस बी निकाल लो या बी प्लस सी निकाल लो, सेम ही आएगा. और एसोसिएटिव भी होता है तीन वेक्टर्स के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग. इफ ए बी सी आर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंड सपोज दिस इज सी वेक्टर.
if ABC represented by side of the triangle in order, this is A, this is B, and this is C. Okay, if I take this as C. All right, then you know that A vector plus B vector is this, okay, which is minus C. All right, but अभी हमारा C जो है वो अपोजिट है. समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ए बी सी आर वैक्टर सब्टेंडेड बाई साइड ऑफ ट्रायंगल. सो इसका मतलब जो मेरा ये वेक्टर होगा ये होगा मेरा सी वेक्टर, बट इट इज निगेटिव ऑफ दैट. सो इट मीन्स इसका इनिशियल और फाइनल जो है वो क्या हुआ, कोइंसाइड कर गया. सो इट इज माइनस सी प्लस सी वेक्टर, सो विच इज नथिंग बट जीरो. सो इट इज ऑप्शन नंबर सी. यहाँ से आपको दिख सकता है कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है. तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बेसिकली क्या आएगा, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका है माइनस ऑफ सी वेक्टर, और सी वेक्टर तो आपका सी वेक्टर ही है, तो इट इज जीरो. ऑलराइट, तो इट इज इजी. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. तो सब्ट्रैक्शन भी देखो, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. सपोज ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर था, तो आपको जब ऐड करना था तो आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दिया. अब आपको ए वेक्टर से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसके अपोजिट में इसको खींच देना है बी वेक्टर को. तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर. डायरेक्शन चेंज हो गई ना. पहले जो डायरेक्शन एन थी, तो अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूँ तो वो एन हो जाती, माइनस एन हो जाती है. ओके, तो डायरेक्शन चेंज हो गई अभी, तो मेरा ये वेक्टर क्या बन गया, माइनस बी वेक्टर. तो अब ये पोजीशन और ये पोजीशन मेरे को क्या बनी, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर. सो इट इज नथिंग बट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. So this is how we subtract. Okay.